पॉलिटिक्स ऑफ सैंक्शंस, यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस लिहाज से अहम है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी, जो कि इकोनॉमिक सैंक्शंस थी, पॉलिटिकल सैंक्शंस थी, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस थी, what impact they had on Iran's behavior and what Iran did despite all these sanctions. Or we start from the beginning. In November 1979, just few months after the Islamic Revolution, Iranian wanted Shah back because Shah had escaped from Iran, or Iranian people, they were really angry. They were angry. उन्होंने ये कहा कि why the Shah of Iran has escaped, because America helped him escaping from Iran. ईरानियन इसलिए भी एंग्री थे कि ईरान की दौलत को लूटा गया. ही वॉज वेरी करप्ट. ईरानियन लोगों को जो खास तौर पर मिजरीज थी, ईरानियन डिस्पाइट हैविंग प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली गैस एंड ऑयल, दे स्टिल वर नॉट दैट रिच एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. और उसकी रीजंस मोर पॉलिटिकल, लाइक अमेरिका के साथ इत्तेहादी होना, ये एक बहुत अहम वजह बना. क्योंकि शाह ऑफ ईरान जितना उसका लैविश लाइफस्टाइल था, इसके ऊपर अगर आई रिकमेंड अनदर मूवी ऑन दैट इज आर्गो. Argo is a movie which is made especially on Iranian hostage crisis, and if you watch that movie you can come to know how lavish lifestyle Iranian Shah and his wife had. And anyways, he escaped from Iran, and after that the people of Iran, they were highly angry. They said Shah of Iran should be returned back to Iran. But what happened? The American embassy personnel, they were taken hostage. उन्हें बंदी बना लिया ईरानियंस ने, स्पेशली जो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया. और 444 दिन के बाद, आफ्टर 440 days, the crisis came to an end. This crisis mean they were set free under an agreement, which is Algiers agreement. If you want further details, you can read Algiers Accord, Algiers agreement between Iran and the United States of America. आपको आइडिया हो जाएगा कि what were the terms and conditions of that agreement. As we are talking about sanctions, we start from the early sanctions, which were lavish, which were actually imposed, lashed against Iran as a consequence of the revolution in Iran. अमेरिका ने जो sanctions लगाई शुरू में, वो hostage crisis की वजह से, अमेरिकन एम्बेसी के जो लोगों को पकड़कर वहां पे बंदी बना लिया था, उसी की वजह से. आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि किसी भी मुल्क की जो एम्बेसी होती है वो उस मुल्क की टेरिटरी होती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, और उसकी वायलेशन नहीं की जा सकती. अगर कोई मुल्क इस चीज़ की वायलेशन करेगा तो इंटरनेशनल लॉ की नज़र में, बैनुल अक़वामी कानून की नज़र में, वो मुल्क जो है वो एक ऐसी स्टेट ठहरेगी जिसके ऊपर सैंक्शंस भी लगाई जा सकती हैं. हत्ता के इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उस मुल्क के खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन भी दूसरा मुल्क ले सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि उस वक्त के हालात क्या हैं. लिहाजा अमेरिका के जो 40 जो होस्टेजेस थे, उनको जब ईरान ने पकड़ लिया, उसके बाद अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई. वो सैंक्शंस जो उस वक्त के जो सदर हैं, दी द यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, ही सीज्ड all the Iranian assets which were in the United States of America. जो भी अमेरिका में उस वक्त ईरान के ऑयल एंड गैस के पैसे डिपॉजिट थे, अमेरिकन बैंक्स में थे या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस में थे, वो तमाम के तमाम अमेरिका ने उन्हें फ्रीज कर दिया. उसके बाद जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स थे, मैं आई गेट यू इंट्रोड्यूस टू देम. एग्जेक्टिव ऑर्डर नंबर 12170, ये 14 नवंबर 1979 को साइन किया प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने, और उसमें ईरानियन गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी अमेरिका में, वो तमाम के तमाम वो प्रॉपर्टी या एसेट्स या फाइनेंशियल जो एसेट्स थे, वो तमाम के तमाम सीज कर लिए गए, फ्रीज कर दिए गए. उसके बाद जो सेकंड एग्जेक्टिव ऑर्डर था वो 12205, 7 अप्रैल 1980, और एक और 12211 जो कि अप्रैल 17 1980 में साइन किए. Or the purpose of these executive orders were to ban all the trade with Iran, all the US trade, because if you remember, America उस वक्त भी लीडिंग स्टेट था, एक चूँकि कोल्ड वॉर का टाइम था,
और कोल्ड वॉर के टाइम में भी अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मिडिल ईस्ट की थी, और मिडिल ईस्ट में ईरान, चूँकि ईरान एट दैट टाइम वाज अ पुलिसमैन ऑफ अमेरिका इन द मिडिल ईस्ट। अब जाहिर बात है जब रेवोल्यूशन आया तो तमाम चीज़ें चेंज हो गई। उसके बाद जो अमेरिका और ईरान की जो इंगेजमेंट थी उसमें ईरान को एक बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि ईरान इतना क्लोज होने के नाते ईरान के बहुत सारे स्टेक्स अमेरिका में थे। लिहाजा इस वजह से इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का पर्पस था कि ईरान को पनिश किया जाए, ईरान के उस एक्ट की वजह से जो वायलेशन थी उस डिप्लोमेटिक कन्वेंशन की। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मार्च 1995 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उन्होंने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किया 12957, जिसने जो ईरान के साथ जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री की ट्रेड थी वो तमाम की तमाम उसको रोकने के लिए, उसको ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए। जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है, ही इज कंसिडर्ड नॉट एज वेरी कोर्सिव, एज वेरी हॉकिश कंपेयर्ड टू अदर प्रेसिडेंट जो कि रिपब्लिकन्स कहे जाते हैं, लेकिन जो हैं कहा जाता है देयर आर सम comparisons between Republican president and a Democrat president, but if you look at the policy of United States towards Iran, it has been constant. लेकिन it also depends George W. Bush and after George W. Bush के बाद President Barack Obama, and after President Barack Obama, if you see Republican again Donald Trump, he revoked that joint comprehensive plan of action. अब इसका मतलब यह है कि that study still holds some water, some valid argument कि ऐसा ही होता है कि दो ममालिक के दरमियान जब भी कोई प्रेसिडेंट तब्दील होता है यहाँ से अमेरिका से, तो इसका मतलब है उसकी पॉलिसीज slightly change होती हैं, लेकिन policies of the United States are said to be permanent and long term as well. Anyways, in May 1995, President Clinton issued executive orders 12959, which prohibited the US trade with Iran. And afterwards, जो ईरान इराक वॉर हुई जो 8 साल चली है, 8 से 10 साल, 80 to 88 तक, the US trade war with Iran was growing following the end of the Iran-Iraq war. It ended abruptly. There are certain reasons because Iran had become bellicose towards the United States of America, and America actually supported Iraq. And what was the purpose? Just to beat Iran. Because Iran was a revolutionary Iran, post-revolution. उसके बाद ईरान को कोशिश की जा रही थी कि ईरान का रजीम किसी तरह से जो रजीम चेंज हुआ है उसको इन द वेरी बिगिनिंग उसको ख़त्म कर दिया जाए. If they could not eliminate that regime, at least because of this war with the neighboring Iraq, the regime in Iran could be debilitated, could be weakened, the position, its worth could be weakened, क्योंकि उसकी वो जो position है वो weak हो सकती थी. तो sanctions and tight relations, diplomatic tensions remained with Iran for a long time. Then in 2000, the Khatami government managed to reduce the sanctions for some items like pharmaceuticals, medical equipment, caviar, and Persian rugs. The reason is that the Iranian government was facing lots of problems because of the sanctions. And there were people in Iran who was actually raising voices against Iranian government. जब एक मुल्क में सैंक्शंस इतनी टाइट होती हैं, उस मुल्क के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, उस मुल्क के लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, उनके पास प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, उनकी जो इंडस्ट्री है वो टोटल बैठ गई है, तो उस मुल्क के अंदर से रिबेलियन वॉइसेस उठनी शुरू हो जाती हैं कि किस तरह की हुकूमत है आप, क्यों इस तरह कर रहे हैं, वी नीड आवर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए. लिहाजा उस वक्त खतरा खड़ा होता है किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो ईरान का रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हो, चाहे वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो किसी भी डिक्टेटरशिप और मोनार्की या अथॉरिटेरियन रिजीम में हो, उसमें ये ऐसा होता है. और अमेरिका की बेसिकली द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड ऑल दी सैंक्शंस वाज दैट द पीपल फ्रॉम विद इन ईरान दे कैन कम अप एंड दे डिमांड अ चेंज. बेसिकली यही एक ऑब्जेक्टिव था कि ईरान के अंदर से किसी तरह से आवाज उठे तब्दीली की. और उसके बाद 2000 मीन्स फ्रॉम 2000 to 2010 real crisis began
when Iran's clandestine nuclear enrichment program was revealed to the world. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, वो ये थी कि ईरान ने जब ये देखा कि पाकिस्तान had gotten the nuclear weapons, and after Pakistan got the nuclear weapons, the behavior of India altered was altered towards Pakistan. And all the world saw that Atal Bihari Vajpayee, who was actually challenging that he will be testing nuclear weapons when he comes to power, he will be actually very much aggressive towards Pakistan. He himself came to Pakistan and he signed Lahore Declaration, opening up relations with Pakistan, Dosti Bus Service, many other agreements signed between Pakistan and India. The purpose of those agreements was that India and Pakistan start normalizing relations with each other. अब ईरान जब इस चीज़ को विटनेस कर चुका था, ईरान की नेबरहुड में इसराइल और रीजन में another country which is not a friendly country with Iran is Saudi Arabia. ईरान के नेबरहुड में इसराइल और सऊदी अरेबिया दो मेन कंट्रीज थे जिनकी तरफ से ईरान को थ्रेट था. लिहाजा ईरान वांटेड टू गेट न्यूक्लियर वेपन्स. ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स अचीव करने में enrichment करना था, जो कि enrichment is a process through which they get the nuclear weapons. और America and Israel, they were actually really fearful if Iran gets a nuclear weapon, what will happen? क्योंकि अगर ईरान के बारे में उनके जो फेयर थे, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल को अपना रवैया टोटली 180 डिग्री पर तब्दील करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करते तो अमेरिका के जो स्टेक्स हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरब के साथ हैं, कतर के साथ हैं, चाहे वो यमन में जो मामला सऊदी अरब के साथ चल रहे हैं, इसराइल की सेटलमेंट्स का इशू है, wherever there are problems in the Middle East, America had to be at the back foot and Israel too. और यही वजह है कि अमेरिका ने कोशिश करके इसराइल को न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए. armed Israel with the nuclear weapons. On the other side, they tried to ward off Iran from getting nuclear weapons. Iran को ना मिले. For students, I want to let you know about a very famous scholar in international politics, Kenneth Waltz. Kenneth Waltz once he was asked a question, okay, what do you suggest if you want to bring peace in the Middle East? What should we be doing? So then he said, Kenneth Waltz ने कहा, Iran should get the nuclear weapons. It was very big statement. It was remarkable statement. जिसने अमेरिका के political circles में, इसराइल में कोहराम मचा दिया कि such a big scholar is talking about it. ऐसा अगर हो जाता है तो लिहाजा when scholars talk, the policy makers listen. और इसमें आप ये देखेंगे ईरान और इसराइल की मुकम्मल कोशिश थी कि Iran should not get the nuclear weapons. Anyway, the primary objective of the sanctions was to ward off Iran from getting nuclear weapons. ईरान में 2005 में एक बड़े ही sober, humble Mahmoud Ahmadinejad, he came to power as president of the Iran. And he was actually revolutionary. Mahmoud Ahmadinejad was said to be very reluctant towards American demands and American policies. In 2005 में Mahmoud Ahmadinejad ने, despite many diplomatic pressures from EU, from France, Germany, Italy, and various countries, they actually had agreed that they will not continue as a uranium enrichment, but they started. International Atomic Energy Agency termed it as a non-compliance with the Safeguards Agreement and United Nations Security Council resolutions. अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में जो न्यूक्लियर ताकतें हैं या जो न्यूक्लियर पाथवे पे चल रही हैं, दे मींस पाथवे दे वांट टू गेट द न्यूक्लियर वेपन्स, उनको मॉनिटर करता है. उनको रोकने के लिए एनपीटी वगैरह नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किए गए हैं और जिनके पास हैं उन्हें फर्दर टेस्टिंग से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी वगैरह करा के रोकना ताकि दे शुड नॉट बी इन द आर्म्स रेस, इन न्यूक्लियर आर्म्स रेस. लिहाजा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानियन इस रीस्टार्टिंग ऑफ एनरिचमेंट को कहा कि इट इज अ नॉन कंप्लायंस विद द सेफगार्ड्स एग्रीमेंट.
उसके बाद ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर आया और उसकी वजह से अमेरिका को एक मौका मिल गया कि अमेरिका दोबारा से ईरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगा सके। लिहाजा अमेरिका ने एक बार फिर डिसाइड किया दे आर गोइंग टू इम्पोज वंस अगेन वेरी टफ सैंक्शंस ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। द रीजन इज दैट ईरान शुड नॉट बी गेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स एट एनी कॉस्ट। लिहाजा उसकी वजह से फिर वंस अगेन फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशंस अडॉप्ट की गई I get introduced 1739 which was done in 2006, 1747, 2007, 1803, 2008 and 1929 in 2010. Lihaza, it was a platform where America could exercise its diplomatic pressure. And when the matters are going to United Nations Security Council, all the world is tilting towards America. The reason is that America exercises true influence through these institutions because these institutions are multilateral institutions और इन institutions के सामने कोई भी country खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई भी country इनके सामने rebel होगा, इनकी बात को नहीं मानेगा, comply नहीं करेगा तो उस country को fear होगा कि उसके खिलाफ collective action हो सकता है। कलेक्टिव एक्शन से मुराद तमाम दुनिया के ममालिक खासतौर पर बड़ी ताकतें मिलकर उस कंट्री को पनिश कर सकते हैं और वो कोर्सिव भी हो सकता है। कोर्सिव से मुराद के बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का हो सकता है। लिहाजा चूँकि दीज इंस्टीट्यूशंस दे आर डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस तो सैंक्शंस ही लगा सकते थे। दे इम्पोज्ड सैंक्शंस एंड वेरी टफ सैंक्शंस once again पैरालाइजिंग ईरान इकोनॉमी। ईरान की इकोनॉमी को टोटल बिठा दिया। ईरान के पास जो भी इंटरनली ईरान कर सकता था सिर्फ इंटरनली वो सस्टेन कर रहा था। ईरान के साथ कोई ट्रेड किसी मुल्क की, यूरोपियन मुल्क की, अमेरिका की कुछ भी नहीं थी, बल्कि ईरान के नेबरिंग कंट्रीज को भी प्रेशराइज किया गया, खासतौर पर बड़ी ताकतों को, डोंट बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम ईरान। उसके बाद प्रेसिडेंट बराक ओबामा आते हैं पावर में। उन्होंने वंस अगेन regime change. Barack Obama was a hope for many countries, especially when if we look at Pakistan. Pakistan also looked at Barack Obama because I remember at that time the drone strikes in Pakistan were mounted. पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो ड्रोन कैंपेन चलाया था पाकिस्तान में to target the terrorist sanctuaries, Barack Obama continued that. But when he came to power, it was thought maybe President Barack Obama is different from George W. Bush, he will not continue. But it was totally wrong. No matter who comes to power, the American policies are long term and they continue. Or Barack Obama ne, once again, he imposed sanctions on Iran. The purpose was that sanctions should paralyze Iranian economy and Iranian government at some point should be realizing that they want to talk to America. They subdue to American demands. They stop uranium enrichment. They stop pursuing nuclear ambitions. लिहाजा इसी वजह से बराक ओबामा ने signed a comprehensive Iran sanctions, accountability and divestment act, CISADA 2010 into law. Iranian oil economy already sank. Small and medium enterprises had serious setbacks, internal unrest among Iranians. ये वो एक जंक्चर था जिसमें ईरान इतना डेस्परेट हो गया कि अब क्या किया जाए। ईरान में there were many voices within Iran, जो कि ईरान में एक theocracy है, it's totally a closed country where you don't have much freedom of expression, you don't have much say, especially from political. You are a political analyst, you are a professor, you are a student. You don't have much autonomy to talk about such issues. लेकिन चूँकि supreme leadership, Ayatollah Khamenei thought the nuclear weapons should be obtained. That is why it continued. लिहाजा सैंक्शन जो चलती रही, ईरान सफ़र करता रहा। ईरान at certain point realized that let's talk about the deal with the United States of America.
और जो डील अमेरिका के साथ ईरान ने सोची कि साइन की जाए, उसके बदले ईरान को क्या क्या मिलेगा, ईरान को क्या लिबर्टी होगी, अमेरिका के क्या फ़ायदे हासिल होंगे। अभी नेक्स्ट जो फॉलोइंग वीडियो होगी वो आई हैव एडेड द लिंक्स इनटू दिस, यू कैन वॉच इट। लेकिन आई वांट टू से, जो कहा जाता है कि बराक ओबामा की सक्सेस थी वो इसी में थी कि बराक ओबामा ने कंपेल किया कि देयर शुड बी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इफ यू रिमेंबर जॉन कैरी, who was the Secretary of State during his time, he was a wonderful diplomat. He continued his diplomacy with Iran. उन्होंने जब ईरान के साथ बात की, ईरान के कन्विंस किया, लिहाजा after months of diplomatic struggle between the US and Iran, both the countries reached an agreement which is known as a Joint Comprehensive Plan of Action. A Joint Comprehensive Plan of Action was termed as a success or diplomatic success. इसे अमेरिका ने भी सुख का सांस लिया कि शुक्र है कि ईरान ट्रेंड्स पे आया, और बराक ओबामा की ये सक्सेस कही जाती है कि बराक ओबामा ने कि ऐसे मुल्क को न्यूक्लियर पाथवे से रोक लिया, न्यूक्लियर वेपन से रोक लिया, जो बिल्कुल इट वाज वेरी क्लोज ऑफ गेटिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इस डील जो थी इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत भी की गई। असल में जो सबसे बड़ा इशू था वो था इसराइल को। Israel never wanted that Iran comes and signs this deal with the United States of America, and if Iran signs it, Iran's economy will be rejuvenating. Rejuvenating means Iran दोबारा से अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। लिहाजा इसराइल के स्टेक्स हाई थे। इसराइल चाहता था कि किसी ना किसी तरह से ये डील न सिर्फ कैंसिल हो बल्कि ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लग जाएं। लिहाजा इसमें कामयाबी हुई। Later on you will see how the Trump administration lashed further sanctions, more sanctions on Iran, and revoked the Joint Comprehensive Plan of Action. In the following video, Iranian nuclear deal is dealt precisely. Iran has reached a historic agreement with major world powers over its nuclear program. But what is Iran giving up, and how does it benefit in the long run? The 109-page document boils down to 5 main areas. Number 1. Iran's uranium stockpile. Uranium is the key ingredient necessary in order to operate a nuclear program. The deal requires Iran to give up 97% of its enriched uranium, taking its stockpile from 10,000 kilograms down to just 300 kilograms. That's much less than what's needed to fuel one nuclear weapon, although Iran maintains the capacity to increase the stockpile quickly. Number 2. Uranium enrichment. Uranium comes in different levels of enrichment. A purity of 90% is what's needed to make a weapon. Per the deal, Iran can still produce a modest amount of uranium enriched at low levels, just 3.67%. And if Iran abides by the deal, enrichment is limited in this way for 15 years. Number 3. Reduction of centrifuges. Centrifuges are the machines used to enrich uranium. Iran has to give up 2/3 of its centrifuges. Some 19,000 used for enrichment need to be reduced to about 5,000. Iran can also have 1,000 more for research and development. So what this means is, if Iran abides by the deal, for the next decade, it will take Iran at least 12 months to produce enough fuel for a nuclear weapon. And to make sure it doesn't cheat, there will be, number 4, inspections. UN inspectors will be allowed to monitor nuclear and other sites, including military ones, but Iran can challenge requests for access. The inspectors need to provide a basis for concern about undeclared nuclear activity. Any Iranian challenge could delay inspections for up to 24 days. Critics say that could be enough time for Tehran to remove evidence it was carrying out banned activities. So what does Iran get for accepting all of this? Number 5. Sanctions relief. The US, the European Union, and the United Nations will relieve many energy, economic, and financial sanctions against Iran that have been crippling the country's economy. Sanctions will likely lift early next year if Iran complies with the principal requirements in the deal. This is great news for Iran's 82 million people, as it's expected to massively boost the economy, increase trade, and bring new investment into the country. So what's everyone else saying?
The Obama administration and many European allies see the agreement as a major victory for diplomacy between Iran and the West. This moment has been a long time coming. Every pathway to a nuclear weapon is cut off. But the deal has angered some critics in Republican-led Congress and some parts of the Middle East, including Israel and Saudi Arabia. What a stunning, historic mistake. They say the deal lifts all economic pressure on Iran and worry that this windfall will increase Tehran's funding of organizations like Hezbollah in Lebanon and the Assad regime in Syria. They also say the deal only curbs Iran's nuclear program for 10 to 15 years, allowing Iran to move back to the brink of nuclear weapon status without paying any price. This deal was elaborated by this reporter of Wall Street Journal. I want to also play another video where Trump has revoked the deal and he signed more sanctions against Iran. You might have learned about why these sanctions were imposed on Iran and what is the ultimate objective of the United States of America. Our top story this afternoon, as expected, the United States has imposed more sanctions on Iran in retaliation for its missile attack on U.S. forces in Iraq earlier this week. They targeted Iran's manufacturing and textile sectors, as well as senior Iranian officials who Washington claims were involved in the attack. Our Kim Dami starts us off. Tightening the screw on Iran, the Trump administration has announced fresh sanctions on the country. U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin made the announcement at the White House on Friday. First, the president is issuing an executive order authorizing the imposition of additional sanctions against any individual owning, operating, trading with, or assisting sectors of the Iranian economy, including construction, manufacturing, textiles, and mining. And let me be clear, these will be both primary and secondary sanctions. Slapping separate sanctions on Iran's steel and iron sectors, the Trump administration warned the new wave of sanctions will cut off billions of dollars of support to the Iranian regime. The sanctions also target 8 senior Iranian officials who Washington claims were involved in the attack on military bases in Iraq that house American troops. They include Ali Shamkhani, the Secretary of Iran's Supreme National Security Council, who threatened to exploit 13 revenge scenarios in response to the U.S. drone killing of Qasem Soleimani. U.S. Secretary of State Mike Pompeo further clarified no sanctions will be lifted unless Iran starts to behave like a normal nation. The goal of our campaign is to deny the regime the resources to conduct its destructive foreign policy. We want Iran to simply behave like a normal nation. We believe the sanctions that we impose today further that strategic objective. Pompeo then highlighted the Iranian president's remarks last week that U.S. sanctions have cost Iran over $200 billion in lost foreign income and investment. The fresh sanctions come just 2 days after President Trump pledged to impose new punitive measures on Iran. Kim Dami, Arirang News. Okay, we have watched what the nuclear deal was about, and afterwards we saw how the Trump administration imposed new fresh sanctions against Iran to stop Iran or rejuvenating Iran's economy, because the primary fear for the Trump administration is that Iran's economy continues. Iran will not be showing any flexibility over its nuclear weapon program. और सेकेंडली जो मेन इशू है वो है इज़राइल का, जो ईरान को ख़ास तौर पे ईरान इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर इज़राइल इन द रीजन। वो चाहते हैं कि ईरान में एक तो रजीम चेंज हो जाए, ये जो रेवोल्यूशनरी रजीम है ये ख़त्म हो जाए, और दूसरी बात अगर ईरान में कोई रजीम बैठता है वो एंटी इज़राइल ना हो। और उससे भी अहम बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान इसी तरह से सिसकता चलता रहे। अगर ईरान सिसकता नहीं चलता तो ईरान ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन या किलिंग की व्हेन ही वाज विजिटिंग इराक,
और कहा जाता है, जो कि आपने अभी रिपोर्ट भी देखी, उसमें ये बताया जा रहा था कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट हिजबुल्लाह में, सीरियन जो क्राइसिस है असद रजीम को करने में एम्पावर, उसके अलावा यमन में जो हुदी रेबल्स हैं, it is said or believed that Iran is supporting those Houthi rebels. I want to let you know that Iran is under pressure because of all these, because Iran is seeking strategic space, strategic advantage in the Middle East, and that is why Iran is being punished for this. Today's politics of sanctions, what I wanted to let you know why the sanctions are being imposed. I gave you an overview of the beginning, how the sanctions started, then later on how the sanctions were converted into nuclear sanctions after 2000, and later on how the Iranian various regimes they came up and they tried to continue the nuclear program. Later on we also learned about how the Barack Obama regime, Barack Obama administration, they managed to ink a deal with Iranian government, and there was a hope that Iran is coming to the terms and Iran would be stopping these all nuclear ambitions. उसके बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का आपने देखा कि how Trump administration was against towards these sanctions. About the Qasem Soleimani, his assassination, there was once again Iran vowed to take revenge of his assassination. अगर आपको पता हो कि there was a statement from the supreme leader of Iran that we will be taking revenge of General Qasem Soleimani assassination, and Iran did it. Iran actually targeted American air bases in Iraq, and as a consequence of that many American soldiers were injured, which Trump administration did not actually agree to it. They said that it's all his false reporting, but they agreed that they were targeted, their bases were targeted. कहने का मकसद ये है, it intensified the enmity between Iran and the United States of America. अब चूँकि today's class, this lecture is about, you study the nature of sanctions and you learn how the sanctions continued and how the diplomatic maneuvers were made about altering Iran's behavior. लेकिन ईरान के ऊपर ये कहना चाहूँगा, in the end ईरान के जो objectives थे, strategic objectives, one is Iran's influence in the region, it continued. ईरान का influence अभी भी इस region में continued है. The second one is stopping Iran or stalling Iran from continuing nuclear. अब ईरान के पास once again is a space that Iran can go nuclear, लेकिन उसके बावजूद America is keeping a very watchful eye on Iran and Iran's nuclear activities. और अगर ऐसा फिर अमेरिका को शक पड़ता है तो once again it will invoke IAEA once again, क्योंकि अमेरिका हमेशा institutions के through ही intervention करता है. लिहाजा if you have any questions about today's lecture, please do ask me these questions. You can contact the CR, and because of the coronavirus pandemic, we all are suffering. Especially the people are dying on daily basis. We see the news that it is widespread everywhere, and I wish you all the best, that you stay home, stay safe. ख़ास तौर पे जो लोग पाकिस्तान के हैं, अधिक दुनिया के ममालिक के लोग हैं, जो ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं जिनमें चाइना, इटली, स्पेन, अमेरिका, या कोई भी कंट्री के लोग हैं, उन सब के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे. सबसे पहले एंड पे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान के लोगों की इनकी हिफाजत करे, और ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.